Hello students, in previous video we have discussed the A and B part of exercise of lesson number 9. Now today we will discuss the C part and D part of this lesson. So C part is tick the correct options. So first one is out of the following, the fuel that is best for reducing environmental pollution is. So you have to find out which fuel is best for reducing environmental pollution. That means the fuel should not produce smoke and or harmful gases on burning. So diesel, so you know that diesel produce lot of smoke on burning. Then is your coal also produce smoke on burning and also leave ash after burning. Next is your compressed natural gas, that is CNG. So yes, CNG does not produce any smoke on burning. And next is cow dung cakes, and it also produce smoke. So CNG or compressed natural gas is the right or correct option. Why? Because it is also called the greener fuel. It does not produce any smoke and does not harm the health of humans and animals. Next is a good fuel is one that. So which fuel is a good fuel? What is the condition? हम कैसे फ्यूल को गुड फ्यूल कहेंगे? A good fuel is one that does not burn easily, जो बर्न होने में बहुत मुश्किल से बर्न होता हो, is costly and not easily available, जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो और easily available भी नहीं हो, does not produce smoke or leave ash, कि आप स्मोक भी प्रोड्यूस ना करें और ऐश भी ना छोड़े, एंड इज नॉट इजी टू स्टोर, और जिसे स्टोर करना भी मुश्किल होगा. सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच वन इज करेक्ट? सो गुड फ्यूल हम किसको बोलेंगे? इसमें से किस टाइप के फ्यूल को हम गुड फ्यूल बोलेंगे? सो अगर फ्यूल बर्न करना इजी नहीं है, लाइक वुड और कोल, so that means it is not so good. Is costly या बहुत costly होगा और easily available भी नहीं होगा, so it is also not good. So does not produce smoke or leave ash, so this is the correct option, because ऐसा फ्यूल ही better होगा, good fuel होगा जो smoke भी produce ना करे, environment को भी कोई नुकसान ना करे और ash भी ना छोड़े, एंड इज नॉट इजी टू स्टोर. सो वो तो और भी डेंजरस है अगर हम उसको इजीली स्टोर नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट इज योर अ फ्यूल दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम. सो यू नो व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल एंड इट इज अ फॉसिल फ्यूल, जो जमीन के नीचे से निकलता है, दैट इज पेट्रोलियम. नाउ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद हमें बहुत सारे टाइप्स के फ्यूल मिलते हैं. सो यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज नॉट ऑब्टेन्ड, विच वन इज नॉट ऑब्टेन्ड. सो जो नहीं मिलता है दैट वी हैव टू टिक. सो फर्स्ट इज योर पेट्रोल. सो वी गेट पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोलियम. डीजल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम petroleum. Kerosene is also obtained from petroleum. Next is your biogas. So biogas we can't get from petroleum. ये हमारे animal waste से बनता है biogas. So this is the correct option. Out of the following, the energy source that is a renewable energy source. So very easy question. Here 4 options are there and you have to find out the renewable energy source. So petrol,
Petrol is a fossil fuel, so obviously it is non-renewable. B is your wind. Wind is renewable because wind is easily replenished after use. Diesel is again a fossil fuel. Coal is also a fossil fuel. So correct option is wind. Next, coal, a common fossil fuel, is formed. अब कैसे फॉर्म होता है हमारा कोल? फ्रॉम द वेस्ट ऑफ एनिमल. एनिमल वेस्ट से होता है? नो. एनिमल वेस्ट से क्या होता है? बायोगैस. फ्रॉम डेड सी क्रिएचर्स? नो. डेड सी क्रिएचर्स से क्या फॉर्म होता है? हमारा पेट्रोलियम. बाय डिके ऑफ वाटर प्लांट्स. तो वाटर प्लांट्स जब डिके होते हैं, सड़ते हैं, तो उससे बनता है? नो. बाय डिके ऑफ वेजिटेशंस अंडर हीट एंड हाई प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जब वेजिटेशंस डिके होती है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट, under heat and high pressure for a very long period of time, so then the coal is formed. So this is the correct option. Now the D part, answer the following questions in brief. So we have to answer these questions. State the main function of a fuel. So what is the main function of fuel? So fuel, what is fuel? Fuel, a substance that produce energy on burning. So that is the main function. Fuel क्या का function क्या है? Energy produce करना है on burning. So we have to write the same answer. So our first question is, state the main function of a fuel. Function of a fuel. So what is the main function? We have discussed the main function of a fuel is to produce energy on burning. The main function of a fuel is to produce energy on burning. So मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना. क्वेश्चन नंबर 2 इज, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड and gaseous fuel, right? So you have to give the examples, only one example of solid, liquid and gaseous fuels. So very easy question. The example of solid fuel, we will write one by one. Example of solid fuel is coal. Coal is solid. Then example of liquid fuel. So you can write any one example. So I am writing here petrol. And the gaseous fuel. Example of gaseous fuel is LPG, CNG, PNG, biogas. You can write any one. So I am writing here CNG. Now here still few questions are left. So read these questions and try to find out the answer. And we will discuss
the answers of these questions in our next video. Thank you.